क्लास 8 हिस्ट्री। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 1 राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप कराने जा रहा हूँ। चलिए इसकी पहले मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या इसमें मेन पॉइंट्स गिवन है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ मैं। वर्ल्ड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है एंशियंट पीरियड, सेकंड है मिडवेयर पीरियड और थर्ड है मॉडर्न पीरियड। By modern period, we mean new ideas, reasoning, and new thinking. In Europe, modern age started in 16th and to 17th century. In 15th century, in Europe, regeneration or reformation movement started. Copernicus and Galileo were great scientists of this time. Bible was written in Latin language. Religion reform movement against the religious corruption started in the period only. Machines was first used in England, इसलिए इंग्लैंड बहुत आगे था। Europe first captured Europe first captured wealthy state of America and colonialism started। कॉलोनियलिज्म मतलब कॉलोनी बननी स्टार्ट हो गई थी। इंग्लैंड कैप्चर्ड नॉर्थ अमेरिका स्टेट एंड डच कैप्चर्ड इंडोनेशिया मेड देम देयर कॉलोनीज। इंडिया बिकम द कॉलोनी ऑफ पुर्तगाल, ब्रिटेन एंड फ्रांस। इन 17th century ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया। ये है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज एंड इट्स सोर्स। तो ये इट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है आपका, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है और दैट इज द फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, ये कि रिटन हिस्ट्री आती है इसमें। सेकंड पार्ट में वर्बल हिस्ट्री एंड देन थर्ड पार्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन और फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो क्या है, मॉडर्न आर्किटेक्चर। अब चलते हैं पहले वाले को लेते हैं, फर्स्ट वाला। हम रिटर्न हिस्ट्री में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो ये रिटर्न हिस्ट्री है, यहाँ दिखाई गई है आपको। रिटर्न हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट ये है, आपको दिखाई दे रहा है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। क्या है, डिफरेंट लिटरेरी कंपोजिशंस, बायोग्राफिक, मेमोरीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा। इसमें क्या है, डिफरेंट गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स, डेली, वीकली, मंथली और फोर्टनाइटली जर्नल्स एंड मैगजीन्स। थर्ड की बात कर लो, इसमें क्या है, रिलीजियस लिटरेचर बाय डिफरेंट रिलीजियस संस, थिंकर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, पब्लिशर्स, इसमें सारे शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड वाले की बात करते हैं। ये है वर्बल हिस्ट्री, जो केवल सुनाई जाती थी। सो एक्सपीरियंस बाय पीपल, फॉक स्टोरीज एंड आई विटनेस एक्सेट्रा इसमें आते हैं। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आपका ये है, मॉडर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें रेडियो आ जाता है, टीवी आ जाता है, फिल्म्स आ जाती है, फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट्स आती हैं और इंटरनेट एक्सेट्रा। और लास्ट नंबर जो फोर्थ नंबर पे है वो मॉडर्न आर्किटेक्चर है। इसमें देखिए क्या है, टू प्लान ऑफ न्यू दिल्ली, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, प्रिंस ऑफ वालेस म्यूजियम एट मुंबई और महंत घासीदास म्यूजियम इन छत्तीसगढ़ एट रायपुर एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। जरा इन दोनों को पहचानने की कोशिश करो। ये पहला वाला पर्सन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है कोपरनिकस। ये कोपरनिकस है और ये गैलीलियो है। ये गैलीलियो है जिन्होंने बहुत कुछ साइंस में योगदान दिया है इतिहास में।
चलिए देखते हैं आगे कुछ। ये एक मैप दिखाई दे रहा है। अब ये मैप जो है आपका मोनर्ची ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया टिल 1940 1940 का है। इसको थोड़ा बच्चों जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। अब फिर देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, तो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ ब्रिटिश ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। यहाँ पे ये क्या है, इरेलैंड है, और ये अटलांटिक ओशियन है दिया हुआ है यहाँ पे। और ये पुर्तगालिज्म और पुर्तगीज है यहाँ पे, पुर्तगालिस, और स्पेन है यहाँ पे, ये फ्रांस है, जर्मनी है यहाँ पे। और इसके बाद और देख लीजिए, ये मोरक्को है, और ये अल्जीरिया है, ये टूनिसिलिया है, टूनिसिया। और इसके बाद और देखिए कौन सा है ओशियन, ये इक्वेटोरियल ओशियन है, ये इक्वेटोरियल ओशियन है यहाँ पे। और इसके बाद ये यूरोप दिखाई दे रहा है, यहाँ रसिया है। और इसके बाद और देख लीजिए, कुछ फ्रांस है यहाँ पर दिया हुआ, ये अफगानिस्तान है यहाँ पे। और ये रेड ओशियन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पर स्वेज नहर यहाँ बनी हुई है। स्वेज टनल इस जगह पे बनी रहती है, तो ध्यान रखना। ये मैन मेड है आपका स्वेज टनल। और इधर मिस्र है ये। और ये क्या है, लीबिया है, इटली में ये तो आपका 1/4 पोर्शन मैंने दिखाया है। अब इसके बाद 1/4 पोर्शन और देखते हैं, इसको चेंज करके तभी समझ में आएगा। यहाँ देखिए क्या है, ये फ्रांसिस वेस्टर्न अफ्रीका है ये। यहाँ पे इटली आपको बताया ही, ये मिस्र है, ये सूडान है, और यहाँ पे ये रेड ओशियन दिखाई दे रहा है आपको। और इसी के साथ नीचे चले जाइए जरा, ये नाइजीरिया है आपका, ये कैमरून है, ये बैगिन कांगो है, इधर फ्रेंच कैंगो है, और टोगोलैंड है यहाँ पे, ये है साइरिया यानी सीरिया लुनन। और यहाँ पे है जर्मन सुल्तान वेस्ट अफ्रीका है यहाँ पे, ये है यूनाइटेड साउथ अमेरिका अफ्रीका है ये। और इधर क्या है, मेडागास्कर है ये, और ये जर्मन ईस्ट अफ्रीका है, और ये ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका है, इटालियन स्मॉलिस हैं, और ब्रिटिश सोनल है, और ये इरिट्रिया है यहाँ। इरिट्रिया मतलब ये सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जिन्होंने ये दिखा रखा है, बनाया गया इनका, जिनके के अपने साम्राज्य छाए हुए थे। इनका एरिया था ये, जो साइड रीजन में अलग अलग पोर्शन से दिखाया हुआ है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर एशिया है, इधर क्या है, चाइनीज डायनेस्टी है, और इधर अफगानिस्तान है, ये इंडिया है यहाँ पर, जिसमें कि ब्रिटिश का ही साम्राज्य था। और ये हांगकांग, यहाँ भी ब्रिटिश है। और फोर्मोसा जापान है यहाँ पे, फिलीपींस ग्रुप ऑफ आइसलैंड है यहाँ पे। और ये गोम है यूएसए। और ये पैराफिक ओशियन है यहाँ पे, ये जापान है आपका। और ये कोरिया जापान है ये फ्रेंच इंडो चाइना है यहाँ पे। बोर्निया है, ये डच है, ये ईस्ट इंडीज है, और न्यू गिनीज है ये। और ये मार्शल ग्रुप ऑफ आइसलैंड जर्मनी है यहाँ पे, मार्शल ग्रुप ऑफ आइसलैंड है ये जर्मनी का। और इस तरह से नीचे ये इंडियन ओशियन दिखाई दे रहा है, ये इंडियन ओशियन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपको इंडियन ओशियन बता ही दिया था मैंने। यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे जो है न्यूजीलैंड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह से ये सारे, जैसे यूएसए का सिंबल यहाँ दिखाया हुआ है इस तरह का, फिर इंग्लैंड का ऐसा दिया हुआ है, और रसिया ही दिया हुआ, फ्रांस है, और जर्मनी है, और ये इटली। इन सबको इन सिंबल्स के द्वारा इसमें दिखाया हुआ है कि इसकी कहाँ पर कॉलोनी बनी हुई है, मतलब कहाँ कब्जा था इनका। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका रिवोल्यूशन है यूरोप में, इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ यूरोप इन 1815, ये 1815 का ये यूरोपियन के कंट्रीज हैं जिसमें ये इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियां बननी चालू हो गई थी यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ। थोड़ा ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैच
मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आता है कॉपरनिकस। ये कॉपरनिकस जो था वो बी वाले में से आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट है ये, खगोल शास्त्र जिसको बोलते हैं। नंबर दो था कोलंबस। कोलंबस ने क्या करा था बच्चों? तो ये है आपका डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। यूरोप से अमेरिका तक का सी रूट इसने डिस्कवर किया था। नंबर थर्ड की बात करिए, मार्टिन लूथर। ये कौन थे मार्टिन लूथर? तो ये है सी वाला ऑप्शन है, ये करप्शन इन रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि रिलीजियस में जो करप्शन छाया होता है उसके लिए थे ये फेमस। और ये है हेनरी एट्थ। तो हेनरी एट्थ की बात कर लीजिए तो कौन से नंबर पे आएगा? ये तो अब एक ही बचा रह गया, दैट इज द फर्स्ट नंबर, नॉट टू ओबे द इम्पोर्टेंट ऑफ पोप। नॉट टू ओबे द इम्पोर्टेंस ऑफ पोप, पोप की इम्पोर्टेंस को नहीं ओबे किया इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है गिव रीजंस का। तो पहला है रीजन में, व्हाई आर मार्टिन लूथर फॉलोअर्स आर नोन एज प्रोटेस्टेंट्स। सो आंसर है ये, जर्मन रिलीजियस लीडर्स मार्टिन लूथर protest against the religious institution and blame against it and gave an opinion in that he told the people, you people should read the Bible and understand the element of the religion and not believe in religious leaders. He challenged the Christian leaders, Pope, for independent power and also protest against the religious settlement and prevailing bad evils. So his believers were called Protestants. Why did European traders establish trading companies? So answer is here, European traders were very laborious. They wanted big market to sell their finished products. If many traders will work together, the profit will be high and there will be security. So they establish many companies. Why has middle class become the backbone of modern society? So answer है, due to trade competition, the society was divided into various groups, among them bankers, mediators, clerks, etc. were important. This group was called middle class. Trained and efficient artisan and producers also came in this group. Modern society was formed. This new group believed in new challenge and they did not believe in orthodox idea. This middle class was very important from economic and social points of view. So they were called as the backbone of मॉडर्न सोसाइटी की ये बैकबोन कहलाते थे। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो आंसर है, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन द नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज, दे वर available at lowest cost. The knowledge spread very fast and modern views spread easily. What goods did Arabian traders sell to European traders? Answer है, Arabian traders sold valuable jewels, high quality of cotton and silk clothes and sugar to European traders. Explain about Renaissance. चलिए Renaissance को देखते हैं। In 15th century, Renaissance of Europe means
Idea revolution, ancient epics in language like Greek, Latin, etc. have been converted into local languages. Due to discovery of printing machine, books were available in large number at lower cost. Therefore, propaganda of knowledge was fast because of learning of ancient knowledge and modern views, the ideas revolution, not new direction. Literature, art, fine arts, sculpture, science, etc. were influenced the change of views. Artists in place of gods and goddess started depicting human emotions and natural beauties in their art. Next, as a result of industrial revolution, which three classes of society comes into role? Explain in short. चलिए आंसर है after the industrial revolution the following three classes came into existence. First आता है capitalist group जिनके पास बहुत पैसा होता था. This group was the most prosperous group of society. The main aim of this was to earn maximum profit. This group has full monopoly on all the factors of production. Second है middle class. In the society, a new class emerged. They were bankers, meditors, or clerks, accountants, etc. Expert artists and producers were also included in this new group. This group was against the orthodox and traditional ideas. Third number आता है labor class. It is the lowest group of society. Their economic condition was miserable. They were orthodox and illiterate people. All the labor and the farm labor were included in this group. How did decline the feudalism take place? So answer है Russia in trade also affected the political areas of Europe. Trades of their own interests supported the government. Rulers also relied the traders by ranking them according to the prosperity of the nation. With this business class got importance and respects in the country. With the rise of trade in Europe, decline in feudalism took place. Any new system was established which was known as कैपिटलिज्म बोलते हैं इसको बच्चों. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है. What was the impact of rise in trade in Europe? So answer है ये three was an importance of rise in trade on social, economical and political life of people. Europe emerged as the most powerful nation of the world and her economic conditions became powerful. Society was divided into three groups: capitalist, middle class, and labor classes. It gave rise to class conflict. The political importance of traders became high. Feudalism came to an end. The condition of labor also changed. People started looking everything from scientific point of view. Gradually, orthodox and traditional views started ending. ये कुछ मैप दिखाया हुआ, हालांकि ये मैप मैंने पहले दिखा दिया है आपको. इसमें क्या है थिंग टू डू. फर्स्ट है पॉइंट आउट फाइव colonies of English in Asia and Africa in the map of the world. Answer है the five colonies in India, Asia and Africa were India, South Africa, Sudan or Egypt and Niger.
तो ये सारे आपको इसमें दिखाए हुए हैं। पहले मैंने इसमें आपको समझा दिया आपको, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। Which event of this chapter influenced you most? Discuss why. So answer है, this chapter has described the Renaissance and Industrial Revolution in good way. It has explained that how religion was earlier a tool of social domination and how this domination was destroyed by Renaissance. It also clear explained that due to result of Renaissance, new technology was discovered which helped in bringing industrial revolution. The industrial revolution then helped in trade increase which brought prosperity to Europe countries. Martin Luther was a religious leader from Germany who declared that the public should themselves read the Bible instead of considering the statement of religious prophets as religious itself. What is your opinion about this statement? So, answer is here. It has been truly said by Martin Luther that should not blind believe religious leaders and their views. Rather, we should read the religious book and try to understand their elements. In how many parts historian divided the world? So answer है, historian divided the world into three parts. First है ancient period, second है medieval period and third है modern period. Next है write two characteristics of modern period. So answer है two characteristics of modern periods are first है reasoning and intelligence. Second है new inventions. What do you mean by source of history? So answer है all those means which are helpful in knowing the history of the world is called source of history. Next question है who had control over the social life of the people in 15th century? Answer है in 15th century the life people was controlled by priests and the feudal lord of knights. Next question in Christians who was considered as the representative of God. So answer है Christians considered Pope as the representative of God. Next when did ideological revolution started in Europe? So answer है ideological revolution started in Europe in 19th century. राइट द नेम ऑफ टू साइंटिस्ट। तो आंसर है फर्स्ट है कॉर्पिनिकस और सेकंड नंबर आता है गैलीलियो का। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज बाइबल वाज रिटन। सो आंसर है बाइबल वाज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। राइट द नेम ऑफ टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हु राइज्ड वॉइस अगेंस्ट करप्शन prevalent of religious institutions. So answer है ये फिलिप इरामुस कैल्विन राइज वॉइस। ये राइज की थी इन्होंने वॉइस। In 16th century, which countries joined the trade competition? So answer है in 16th century, England, France and Holland involved in trading competition. Which company of Europe come to India? So answer है British East India Company. Next है what do you mean by industrial revolution? So answer है industrial revolution means establishment of large scale industries for large scale production. Revolution means to escape the accept the new system in place of traditional old system. By industrial revolution means
accepting new techniques, machines, and tools and new resonance in place of old resonance. जो रेजोनेंस नहीं रिसोर्सेस है, पहले वाले जो टूल्स थे रिसोर्सेस थे उस सेट करके अब ओल्ड वाले रिसोर्सेस हटा दिए गए हैं, न्यू रिसोर्सेस आ गए हैं। चलिए एंड न्यू रिसोर्सेस इन प्लेस ऑफ ओल्ड रिसोर्सेस। चलिए नेक्स्ट है ये, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियलिज्म? क्या है कॉलोनियलिज्म का? सो आंसर है कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ acquiring more and more colonies by conquest or other means and keeping them dependent. Thus, under colonialism, the worker country loses its independence and come under the foreign domination। ये फॉरेन डोमिनेशन में आने शुरू हो गए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु वर कॉपर्निकस एंड गैलीलियो, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन? चलिए आंसर देखते हैं। कॉपर्निकस एंड गैलीलियो वर द फेमस साइंटिस्ट who established scientific explanation about universe which was just opposite of olden beliefs. For example, they proved that the earth revolves around the sun and not the sun. Due to this revolution, days and nights take place. These thoughts had adverse effect in religious faith. From here only Reformation movement started. What do you mean by reform in religion movement? So answer है, Roman Catholic Church has a great control over the society in the medieval Europe. Christian whole book Bible was written in Latin. Common people could not understand this language. Christian religious leaders encouraged bad practices by non people and gain profit. They also exploited people in the name of religion. Corruption was leading in these religious institutions, so the revolution started in Europe against corruption, which is known as reform in religion. How the importance of king emerged in Europe? So answer है, during the 16th century, common people lost their power and importance of king was growing, living in a particular place at a geographical area with same language, historical customs, relations with political and economical welfare of the people gave birth to a feeling of nationalism and gradually all the powers transferred to the king. It becomes centralized and become the most effective. For this reason, imperialism evolved in Europe, England, France, Spain, etc. National state come into entity. Why it becomes necessary to search new sea routes? So answer है, the following were the cause to discover of new sea routes. So answer है, first for Europe only one route was there to come to Asia. Istanbul was the main trade route of India and Europe. On Istanbul and was ruled by Turkey. Second hand, European had to purchase goods from Arabian traders by paying more tax. This gave less profit to them. Third hand, now Europeans wanted to have direct trade with Indians, so they started to discover new sea routes. Write the five advantages of trade competition. Answer है, first, due to economic progress there was rise
in standard of living. Second है cheap and good quality goods were available. Third है machine were invented. Fourth है expansion of transportation. Fourth है new employ. Fifth है ये new employment opportunities were created. Write the five advantages of trade competition. So answer है first. Rich becomes more rich and poor becomes so poor that he could not get one time food. Second है the conflict between the poor and rich started and poor was more exploited. Third है cottage industries full destroyed. Fourth है there were increase in unemployment opportunities. Fifth है moral values become down. What was the impact of Industrial Revolution of England? Answer है in England Industrial Revolution started in 18th century. Due to this new invention took place in England for fast production and supply of raw materials from other countries. Trade relations were improved. In search of new market, new routes were discovered. Write the bad effect of colonization. क्या है आंसर है फॉलोइंग वर द बैड इफेक्ट ऑफ colonization. फर्स्ट है all the nation tried to increase their colonies, so the competition to increase the number of colonies gave heir to First World War. सेकेंड है ये to have full control over colonies, the people of colonies were not allowed to have education under colonial ruler रूल जो है इसके अंदर नहीं कर सकते एजुकेशन नहीं दे सकते. थर्ड है ये misuse of natural resources were done. Natural resources and minerals resources were badly exploited. Fourth है under colonial rule people of colonies were economically and socially exploited. Thus, problem of unemployment, poverty increased. ये लेसन यही समाप्त हो रहा है बच्चों. नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें. कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके. मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स. इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ. मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.